Well, viewers, shifting our focus to the US-India trade deal, where after months of suspension and pressure and tariff threats, the India-US trade deadlock is finally over. And the announcement didn't come after negotiations or joint statement. It came straight from Donald Trump himself. In a late-night political bombshell, US President revealed that a direct phone call with Prime Minister Narendra Modi sealed the long-pending trade deal with immediate effect. What changed? The tariff slashed, penalties drop, and a massive buying promise from India. Here are the big takeaways from the Modi and Trump. Posting on social media, Truth Social, Donald Trump said he spoke to Prime Minister Narendra Modi, calling him one of my greatest friends and a powerful and respected leader. And then came the headline move. The United States will now charge India a reduced reciprocal tariff of just 18%, down from 25%. For Indian exporters, this is instant relief. After months of uncertainty and fear of trade disruption, clarity has finally arrived, especially for sectors like engineering goods, textiles, chemicals, and auto components that rely heavily on the US markets. But viewers, that's not all. In a major reversal, Washington has also scraped the additional 25% penalty imposed on India over its purchase of Russian oil. According to US officials, this rollback follows India's commitment to stop buying Russian oil and instead source energy from the United States and potentially Venezuela. Viewers, this marks a dramatic climb down from August 2025, when Trump had threatened tariff of up to 50% on Indian goods. Now comes the quid pro quo. Donald Trump says Prime Minister Narendra Modi has committed that India will buy over $500 billion worth of US goods, spanning energy, technology, agriculture, coal, and more. Even more striking, Donald Trump claims India will move to zero tariff and non-tariff barriers on US products. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the deal, thanking Donald Trump for what he called a historic reduction in tariffs. Well, viewers, now I'm being joined by former Ambassador Deepak Vora. Deepak Vora, thank you so much for speaking to News9. Deepak Vora, my question, the first question, what are the real economic impacts of the US reducing tariffs on Indian exports to 18% that has been announced by US President Donald Trump yesterday? Well, thank you very much. Always a pleasure to be with you on your amazing channel, and you yourself are outstanding. May I just say today is terrific Tuesday. So smile, baby, smile. As Donald Trump says, drill, baby, drill. Why should we be smiling? It reflects certain things. Today is the day dedicated to Lord Hanuman, symbol of courage, strength, selfless devotion, like Prime Minister Narendra Modi. Our fabled duck diplomacy has again triumphed. I've been listening to a lot of podcasts, a lot of channels saying, ye kharab hai, wo kharab hai, this is going to collapse, that is going to collapse. Most people don't. I've been in diplomacy 52 years. Like a duck on the surface, everything is calm and placid, but beneath, we are paddling, we are pedaling furiously because we want to come to a deal. So Donald Trump, of course, is very pleased. So are we Well, that he has Deepak announced this Vora, deal. I'm extremely sorry, but let's cut across to live visuals coming in from Lok Sabha, where the budget session has started and ruckus is going on. सदन नहीं चलाना चाहते और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Well, Parliament session has been adjourned till 12 p.m. after ruckus by the opposition parties, where the opposition parties have been claiming that Prime Minister Narendra Modi has surrendered to US President Donald Trump, and the opposition have been demanding that the papers related to the India-EU trade deal and also the India-US trade deal should be laid down inside the parliament. Deepak Bora, extremely sorry for cutting you, but you were talking about the real economic impacts of the US reducing tariffs on India, making it to 18%. What is important is that our trade with the United States, our exports had been growing despite the high tariffs, including the 25% punitive tariffs, because we were buying oil from Russia, which just shows that we are very resilient. Plus, we have the India-EU trade deal. I think the United States would have taken note of that. Essentially, sir, whatever the figures, the idea of 18% or 16 or 22.5 or 14.65%, these are all figures that are plucked out of the air. Important thing is for America now to have realized, and I'm very pleased that they have done so, American business people would have influenced the White House, that look, what you are doing with India, it's not an what India is holding back, that is on energy or agriculture or dairy, it's not an existential challenge to the United States. Why are you so worried about it? Just go right ahead. There are so many other areas. Trade is only one part of the understanding we have with the United States relationship. There's technology, there's space research, there's ocean research, there's education, there's semiconductor, there's so much, there's rare earths, so much more. So don't just spoil the pudding, as we say, by holding out on one ingredient, which was the trade deal. Nevertheless, sir, our exporters will certainly benefit. You can see that the stock market has gone through the roof. In fact, as soon as we finish this conversation, I'm rushing off to buy a few things because it might keep climbing by the afternoon. We may get even better news. So all told, it's a very, very positive thing. And the Prime Minister, by the way, has given Donald Trump a verbal peace prize by praising his leadership as vital for global peace, stability, and prosperity, saying that Prime Minister Modi and I, so says Trump, are the people who get things done. Others do not, is what he was trying to say. I think this is a personal relationship which is very, very strong between the two. And I am personally very satisfied. I've served in the United States. I go there every year. Very pleased that the little wrinkle that we had in our overall very strong bilateral relationship has been smooth. Deepak Bora, does it meaningfully boost the Make in India, or does it put into risk the increased dependence on US imports? Not at all, sir. It's going to be a boon for the Make in India initiative, for MSMEs, for people who were holding back and saying, America ko bheje na paje, the tariffs are bothering us. I have several friends in the business circle. They were saying the same thing. What's going to happen? What's going to happen? Now their questions have been answered. So it's really going to boost our exports. There's no doubt about it. The India-EU free trade agreement, we haven't yet signed the deal. We have said that we've concluded our negotiations. As and when that is implemented, that is also going to boost our export. So I believe it's a recognition, sir, of India's growing economic and commercial clout. The big countries, the EU as a bloc, the United States, Russia, I would say, realize that without India, they are not going to be able to realize their own potential and grow higher in terms of their bilateral, their country's economic growth. So therefore, I would say congratulations to both of them, even though, sir, please note that Donald Trump said that at the request of Prime Minister Modi, I've done what I did. All right, the man has an ego, we'll pander to it if we have to, not directly, but we'll say, all right, he said something, let him say it, we won't react. Importantly, we have a deal. If it's not the mother of all deals, it's certainly the daughter of all deals. Well, Deepak Bora, if India is expected to stop buying Russian oil, how feasible is that? It's not feasible at all. Our partnership with Russia, I've served there, sir. I was ambassador in 4
former Soviet space countries. Let me tell you that their relationship has been the test of time. They have never imposed sanctions on us. The West has done it. The United States has done it. They have not. Why should we spoil our relationship with them? As far as whether we're importing X amount barrels of oil or we do X minus 10% or whatever, that is remains to be negotiated. But the reaction that I've got, not yet officially from Moscow, but from my friends there, is that, yeah, go right ahead. We know that our bilateral, this is American, Russian friends telling me, our bilateral relationship will always stand the test of time. I'm quoting them, sir. Viewers, right now we have a breaking news. It's an inside scoop from the key NDA meet. Prime Minister Narendra Modi has said that the US trade deal created a positive atmosphere where people were criticizing it, but we remained patient and it yielded result. The Prime Minister said that he had stated that the world order is changing and this is becoming evident after COVID-19, and today the world order is shifting in India's favor. Well, viewers, it's a breaking news coming in from inside the Parliament, where in the key NDA meet, Prime Minister Narendra Modi has said that the US trade deal created a positive atmosphere. People were criticizing it, but we remained patient and it yielded result. Prime Minister Narendra Modi said that he had stated that the world order is changing and this is becoming evident after COVID-19. And today the world order is shifting in India's favor. Well, viewers, it's a big message coming in from Prime Minister Narendra Modi, where he was facilitated by the NDA leaders inside the Parliament. A key meeting of the NDA leaders had taken place inside the Parliament, where all the NDA leaders congratulated Prime Minister Narendra Modi on the India-US trade deal, which has created a positive atmosphere. Now, Prime Minister said that people who were criticizing it, and here Prime Minister Narendra Modi refers to the opposition parties who time and again raised questions and had doubts on the central government whether the trade negotiations will come to an end. In fact, in the all-party meeting as well, a lot of the opposition parties, in fact, one of the partner of the BJP in the NDA, TDP, also wanted a clarity as far as India and US trade deal is concerned. And the message that has come in from US President Donald Trump yesterday on Truth Social clearly says it all, where it's a historic decision that has been announced by US President Donald Trump, and Prime Minister Narendra Modi said that he had stated that the world order is changing and this is becoming evident after COVID-19, and today the world order is shifting in India's favor. Time and again, well, viewers, I'm being joined by my colleague Anand Pandey. आनंद जी, ये जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, जो एनडीए की बैठक हुई थी आज पार्लियामेंट में, वहां पे प्रधानमंत्री द्वारा क्या बताया गया है एनडीए पार्टनर्स को? देखिए, आज एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनका स्वागत किया गया। और इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई है, जिसका कल रात में ऐलान किया गया था, उसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री का एनडीए संसदीय दल यानी कि पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में सबने स्वागत किया, सम्मान किया। प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। और बैठक में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में इंडिया ईयू डील हो या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील हो, इंडिया यूएई डील हो, इंडिया मॉरिशस डील हो, उसके बाद कल रात जो इंडिया यूएस जो एक इतना बड़ा डील का ऐलान किया गया है, वो बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, कितने मजबूती से हम फैसले कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के लीडर्स को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो
अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बना है। और ऐसे में ये जो हमने पेशेंस रखा ये उसका नतीजा है। और पीएम ने कहा कि हमारी लोगों ने शिकायत की, हमारी आलोचना की। बेसिकली वो अपोजिशन की तरफ बता रहे थे कि किस तरह से अपोजिशन ने सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस को लेकर बार बार आलोचना की, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने पेशेंस रखा ये उसका नतीजा है, कितनी बड़ी ट्रेड डील हुई है। अब उन्होंने कहा कि अब हम इसको आगे ले जाना है, हमको अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे भी हमको ध्यान देना है। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात ये भी कही कि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है खासकर कोविड के बाद से, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है भारत के फेवर में टिल्ट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। और इससे ये पता चलता है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी जो एनडीए के जो एमपीज थे उनको इस बारे में बताया और कहा कि ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी एक बड़ी जीत है। और ये बताता है कि कैसे अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हमको उसके अच्छे नतीजे मिलते हैं। आनंद पांडे जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, विपक्ष ये भी कह रहा था कि केंद्र ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो अभी जो टैरिफ रिड्यूस किए गए हैं 18% तक, तो इस पे विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है? जी देखिए, विपक्ष तो अभी भी सरकार की ही आलोचना कर रहा है। सरकार को लेकर विपक्ष का यही कहना है कि भले ऑपरेशन सिंदूर को की सीज फायर की बात हो या फिर अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील की बात, ये आखिर क्यों पहले अमेरिका और ट्रंप इसका ऐलान करते हैं और भारत बाद में क्यों ऐलान करता है। यानी कि अपोजिशन अभी भी उसी स्टैंड पे कायम है कि अगर ऐसी ट्रेड डील हुई है तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सरकार को, देश को बताना चाहिए था। लेकिन आखिर क्यों हम ऐसे अनाउंसमेंट के लिए पहले ट्रंप का वेट करते हैं, क्यों पहले ट्रंप और अमेरिका ऐसे अनाउंसमेंट करता है और बाद में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही साथ अपोजिशन ये भी चाहता है कि अभी भी इस ट्रेड को लेकर पूरी बातें जो फाइन प्रिंट्स है वो सामने नहीं आई है, इसकी डिटेल्स नहीं आई है। और ऐसे में अपोजिशन ये भी चाहता है और ये बार बार ये कह रहा है कि सरकार को इस पूरे ट्रेड डील के सारे पॉइंट्स को उसको जनता के सामने रखना चाहिए, संसद के सामने रखना चाहिए। और तभी हमको पता चल पाएगा कि आखिर जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत को क्या हासिल हुआ है। तो ऐसे में अपोजिशन का काम है सरकार पे सवाल खड़े करना, सरकार को क्वेश्चन करना, पॉलिसी को क्वेश्चन करना, अपोजिशन वो कर रहा है। लेकिन बात सही है कि अभी जो फाइनल डिटेल्स अभी इस डील के नहीं आई है, इसका इंतजार किया जा रहा है। और सरकार के बड़े मंत्रियों से हम लोग की बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ा आप इंतजार करिए जो फाइनल डिटेल्स का, उसके बाद जब आएगा तो जो जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे, वो जनता के मन में हो या फिर अपोजिशन के मन में। आनंद जी, क्या इसी बात पे पार्लियामेंट में रकस चल रहा था? हमने देखा जो पार्लियामेंट सेशन है वो 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। क्या विपक्ष यही मांग कर रहा था कि पार्लियामेंट में टेबल किया जाए, चाहे इंडिया ईयू की ट्रेड डील हो या इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो, इनके सारे पॉइंट्स टेबल किया जाए? और दूसरा सवाल ये कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था उस समय टीडीपी जो एनडीए की पार्टनर है उनके द्वारा भी क्लैरिटी मांगी गई थी सरकार से इंडिया यूएस ट्रेड डील के मामले में। बिल्कुल, क्लैरिटी जो है सरकार का कहना है कि हम जनता को बताएंगे, क्लैरिटी देंगे जो भी फाइनल पॉइंट्स है, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है कि आप इसको छिपा के नहीं रख सकते। ये इतना बड़ा डील है और आपको इसके पॉइंट्स को बताना पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तमाम अलग अलग सेक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में सरकार कह रही है कि इंतजार करिए, पेशेंस रखिए, सारी जो डिटेल्स है वो बताई जाएगी। अभी बहुत सी चीजें भी अभी भी वर्कआउट हो रही है। अभी कल इसका ऐलान कर दिया गया ट्रेड डील का, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वर्कआउट हो रही है। सरकार कह रही है कि हम इस पे एक डिटेल प्रेस स्टेटमेंट भी जारी करेंगे जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इस बारे में और डिटेल्स जो है बताएगी। और ऐसे में सरकार का कहना है कि जो भारत ने पिछले कुछ समय से जो टफ नेगोशिएशंस किए हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका के दबाव में नहीं झुका है और उसी का नतीजा है कि जो टैरिफ है वो अमेरिका को 18% करने के लिए भारत ने राजी कर लिया है। जो कई हाई लेवल की मीटिंग्स हुई, भारत का डेलीगेशन अमेरिका गया, अमेरिका का डेलीगेशन भारत आया। तो ऐसे में जो टफ नेगोशिएशन, जो टफ स्टैंड भारत रखा, भारत बार बार ये कहता रहा था कि हम अपने हितों से कोई भी समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी ट्रेड डील में। और अब सरकार के जो मंत्री है वो यही कह रहे हैं कि भारत जो है झुका नहीं है, बल्कि
भारत ने अपनी शर्तों पे अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड डील की है। और ऐसे में इस ट्रेड डील जो कहने के लिए एक आपको ट्रेड डील लगे, लेकिन सरकार का कहना है कि बहुत बड़ी ट्रेड डील है और इसके रेमिफिकेशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर जो है बहुत बड़ा होगा। और भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब वो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी दोनों पे एक साथ ध्यान देंगे तो भारत में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बल्कि हमारा जो सामान है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग के सामान है, उसको एक बहुत बड़ा बाजार जो है अब मिलेगा। वो भले ईयू के साथ हो, या फिर अमेरिका के साथ हो, मॉरिशस के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। आनंद पांडे जी, सरकार के तरफ से हम किस तरीके से देखते हैं कि ये एक मेजर बूस्ट मिला है सरकार को, क्योंकि काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन की बातें चल रही थी यूएस के साथ, और आखिर में ये डिसीजन जो है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से अनाउंस किया गया है। तो सरकार इसको कितनी बड़ी जीत के तौर से देख रही है? देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भारत ने जो टफ स्टैंड रखा, जो भारत जो है अमेरिका के सामने नहीं झुका, और न ही भारत ने जब भी बातचीत हुई इस ट्रेड डील को लेकर, तो भारत ने हमेशा अपने किसानों का, अपने मैन्युफैक्चरर्स का, अपने ट्रेडर्स के जो हित है उनको ऊपर रखा। और ये उसी का नतीजा है कि आज ये ट्रेड डील हुई है। सरकार का ये भी कहना है कि जो बड़ी जो एक्सपोर्ट इकोनॉमीज है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया का जो टैरिफ है वो बहुत ही कम है। और इस हिसाब से अमेरिका की अगर बात करें कि जो एक्सपोर्ट करती हैं जो बड़ी कंट्रीज है अमेरिका को, उसमें इंडिया पर सिर्फ 18% का टैरिफ है। लेकिन बाकी जो एक्सपोर्ट इकोनॉमीज है, इंडोनेशिया की बात करें तो उसमें 19% का टैरिफ है। वियतनाम जो कि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, उस पर अमेरिका की तरफ से 20% का टैरिफ है। बांग्लादेश 20% है, चाइना पे 34% है। तो ऐसे में उस लिहाज से देखें तो भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 18% पे लगाया है टैरिफ। बाकी जो बड़ी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है उनकी तुलना में ही सबसे कम है। आनंद पांडे हमसे बातचीत करने के लिए, और लेट्स कट अक्रॉस टू द रिएक्शंस दैट वी आर गेटिंग from the Parliament after this massive announcement that has come in from US President Donald Trump. आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। Ultimately, we will have to see what the fine print of the trade deal is. But going by what President Trump is saying and the manner in which a unilateral announcement was made about a purported Indo-US trade deal, it has serious implications for India's strategic autonomy. भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। India needs America and America needs India. Both are large economies, both have large populations. America cannot replace the supply chains from India very easily. But President Trump is a very mercurial president. At one stage he said the Indian economy is dead.
Now he says that he's very happy to trade with India. At one stage, he said that he interceded to stop the war between India and Pakistan, and he said that numerous times. So really do not know where Trump stands. I mean, right now, he has announced in his social media post that he is reducing the tariff to 18%. On 26th January, India and European Union announced what has been described as the mother of all trade deals. It was a justified description because it was a massive trade deal. 7 days later, we have seen the first child of the mother of that trade deal. In my view, the Americans got the message. India had finessed the American market with the trade deal with Europe. President Trump's attempt to use tariffs as aggression in order to make India kowtow, in order to make India bow down, had been very neatly sidelined, because it is obvious that the Indian gems, the Indian seafood, Indian textiles, which were now being denied the American market, would find an equally big market in European Union, making the American threats infructuous.